हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस एपिसोड में हम पढ़ते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए देखिए, अभी अपने 9th में भी पढ़ा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसमें नॉर्मली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप्स है। 9th में आपने इंडिविजुअली हर एक शेप का अलग अलग सरफेस एरिया पढ़ा होगा, अलग अलग वॉल्यूम को पढ़ा होगा। इस चैप्टर में अभी क्या है, उन्हीं सारे शेप्स को अभी क्या कंबाइन करके बोला हुआ है। तो कंबाइन करके अभी हम किस तरह से सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स को निकालते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। सारे फॉर्मूले जो भी आपने 9th में पढ़े थे, सारे फॉर्मूले वही यूज होंगे अभी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. So we know the volume of cube. Volume of cube is equals to side cube. Volume of cube के side cube. Now we can find out the side of the cube. So this will be side cube is equals to 64. Therefore side is equals to 64 cube root. So this will be 4 into 4 into 4. Cube root times, so this will be 4 centimeter. So we got side of one cube as 4 centimeter. Now it is said that these two cubes, these two cubes, so they are joined end to end. If we join them end to end, so the length will be, this will be 4 plus 4, so length will be this total 8 centimeter. This will be 4 centimeter and this will be 4 centimeter. So total will be the 8 centimeter length, and width will again be the 4 centimeter only, and height will be the 4 centimeter. So the resulting cuboidal will have dimensions as L is equals to 8 centimeter and B will be 4 centimeter and H will be 4 centimeter. So length, width and height there will be a change, but अभी देखिए दो क्यूब को, सपोज अभी हमने दो क्यूब को लिया हुआ है, ये दो क्यूब है। इन दोनों क्यूब का भी क्या बोला हुआ कि सिंगल एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन्हीं दोनों क्यूब को अभी मैंने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। अभी एंड टू एंड ज्वाइन करने से ये देखिए क्यूबॉइडल बन गया। सो इस क्यूबॉइडल की अभी हाइट सेम है जो क्यूब की थी, इस क्यूबॉइडल की विड्थ भी सेम है जो हमारी ओरिजिनल क्यूब की थी। लेंथ के केस में अभी देखिए यही तो लेंथ आ रही है, लेंथ क्या होगी, डबल होगी, बिकॉज दोनों लेंथ क्या होगी, एडअप हो गई। सो अभी सिर्फ लेंथ, जो भी हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइडल बनेगा उसका लेंथ 4 + 4 8 हो जाएगा, विड्थ विल रिमेन द सेम एंड हाइट विल रिमेन द सेम। सो अभी रिजल्टिंग क्यूबॉइडल का हम निकाल सकते हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, so this will be 2 times LB plus BH plus LH। सरफेस एरिया क्यूबॉइडल का यही फॉर्मूला है, हमने 9th में पढ़ा हुआ है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ ऑलरेडी गिवन 8 इंटू विड्थ 4 प्लस विड्थ इज 4 इंटू हाइट इज 4 प्लस लेंथ इज 8 इंटू हाइट इज 4. So we can calculate this. This is 2 times as it is 32 plus 16 plus 32. So now we can add them. This will be 2 times and this is 80. So this is comes out to be 160 centimeter square. So surface area of cuboid is 160 centimeter square.
So we got the surface area of the cuboidal. Now coming to question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फेयर के शेप में, ये हेमिस्फेयर हो गया, एंड दिस इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर. सो अभी हमने एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर को बना लिया. hollow hemisphere mounted by a cylinder. So this is the radius of the hemisphere and this is the height of the cylinder and this is again the radius of the cylinder. So a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. So both are hollow. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. So diameter is 14 centimeter. We get the radius as 7 centimeter and the height of the vessel is 13 centimeter. So this complete height of the vessel is given to us. This complete height of the vessel, this is 13 centimeter. It is given to us. So this is 13 centimeter. So naturally this diameter, this radius of the hemisphere will also be the 7 centimeter. Now we can get the height of this cylinder. Height of the cylinder will be 6 centimeters. So total is 13. 13 minus this 7 centimeter will give us the height of cylinder, 6 centimeters. Find the inner surface area of the vessel. We need to find out the inner surface area of the vessel. So the total height of the vessel, this is equals to 13 centimeter given to us and diameter of the hemisphere is given is equals to 14 centimeter. So therefore radius of hemisphere, so this will be 14 by 2, 7 centimeter, and we can calculate the height of cylinder. So height of cylinder will be 13 is the total height minus, so this is the 13 is the total height minus this height is the 7 centimeter, the radius of the hemisphere. So 13 minus 7 will give us 6 centimeter. Now the inner surface area of the vessel will be inner surface area of vessel. This is equals to inner surface area is equal to the inner surface area or the curved surface area of the cylinder plus the curved surface area of hemisphere. So this will be, we can say, curved surface area of cylinder plus CSA of hemisphere. So this is equals to CSA of the cylinder is 2 pi RH plus CSA of hemisphere is, for complete sphere this is 4 pi r square. So for hemisphere this will be 2 pi r square, half of the sphere. So now we can put these values. So this will be, or we can take up common also in this. So common will be 2 pi r. And from here remaining is h and from here it is r. So this is 2 into 22 by 7 into r is 7 and height is 6 plus r is 7. So we can solve 7 7. So this is 44 into 13. So this will be, on multiplication we will get 572 centimeter square. So curved surface area is, so CSA of vessel is equals to 572 centimeter square. Simply CSA will be the CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. So coming to question number 3.
A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is given 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So the toy is again, this is in the form of the hemisphere. So a toy is in the form of a cone of radius this mounted on a hemisphere. So this is the hemisphere. Now on this hemisphere, this is a cone shaped. So radius is already given to us. Radius is 3.5 centimeter. So this is 3.5 centimeter, and it is given that total height. Total height is already given to us. The total height of the toy is 15.5 centimeter. So we can find out this height. So this height of this cone, so height of the cone will be 15.5 minus 3.5. So this will be 12 centimeters. So this is 12 centimeter for us. Now we need to find out this slant height, because in a cone, see ये अभी हमने cone का structure को लिया हुआ है अभी. So this is just 90 degree, and this is known as the slant height. This is radius and this is height. So the slant height is always the hypotenuse of this right angle triangle. So अभी यहाँ से हमें radius दिया हुआ है, height we already know 12 centimeters. So first of all we need to find out the slant height, because curved surface area के लिए slant height की जरूरत पड़ेगी. So we need to find out the total surface area. So total surface area will be equals to the surface area of this hemisphere plus the surface area or the curved surface area of this cone. So first of all we'll need to find out the slant height. So radius of cone is given as 3.5 centimeter, and height of cone this is equals to total height is 15.5 minus this total height 15.5 is given minus this height. So this height is equal to the radius minus 3.5. So this is 12 centimeter. Now slant height of cone will be equals to, this will be h square plus r square root. So L is equals to, now we can find out h square. H is given already 12. So this is 12 square plus r is 3.5 whole square. So L we can calculate. So this is 144 plus 3.5 whole square. So this will be 12.25. So we can calculate the L. So this comes out to be 12.5 centimeters. So CSA of toy will be equals to CSA of cone plus CSA of hemisphere. So CSA of cone plus CSA of hemisphere. So CSA of cone we know pi RL plus CSA of hemisphere will be 2 pi r square. So from here we can take up pi r as common. So this will be L plus from here this will be 2 r. So pi is 22 by 7 into r 3.5. L already calculated, this is 12.5 plus 2 into 3.5. So 7 1 ja, this is 0.5. So on multiplication we get 11 times, and this will be 12.5 plus 7. So on calculation we got this will be 214.5 centimeter square. So this is the CSA of
toy. So coming to question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. एक किसी हमने क्यूबिकल बॉक्स को ले लिया and this is surmounted by a hemisphere. So this is surmounted by a hemisphere. Side is given to us. This is 7 cm. So a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. So complete solid की अभी हमें क्या करनी है? Surface area निकालनी है. So अभी हम क्या करेंगे? पहले तो complete solid का surface area निकालिए. तो greatest diameter will be equal to the side because ये completely इसको superimpose कर रहा है. So the greatest diameter of hemisphere is equal to the side of cube. So this is equals to, therefore we got the greatest dia of hemisphere. This will be 7 centimeters. So we got the greatest dia. Now we need to find out the total surface area of cuboidal. So surface area of solid. So surface area of solid will be equals to, this will be area of cube plus area of hemisphere minus base area of circle, because हेमिस्फेयर का जो ये बेस एरिया होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज उतना एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा. अभी सपोज हमने ये हेमिस्फेयर को बनाया हुआ अभी, तो हेमिस्फेयर का सिर्फ ये वाला एरिया काउंट होगा, ये बाहर का आउटर सरफेस एरिया, दिस एरिया विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज ये एरिया क्या होगा अभी हेमिस्फेयर के लैंड से क्या होगा, कवर हो जाएगा. सो अभी हमने जब भी अगर क्यूब का एरिया निकालेंगे तो क्यूब का एरिया में क्या होगा, एक फेस का एरिया कुछ पार्शियल एरिया क्या होगा हेमिस्फेयर से कवर हो जाएगा, तो रिमेनिंग एरिया ही काउंट आएगा. इसलिए अभी हमने ये बेस एरिया को भी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ से. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर और वी कैन टेक अप एज 6L स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर विल बी 2 पाई r स्क्वायर माइनस area of the base will be pi r square. So this will be equals to 6 into 7 square plus 2 pi r square minus pi r square, this will be pi r square. So this will be 6 into 7 square plus 22 by 7 into r square will be 7 by 2 into 7 by 2 because 7 is the diameter, so radius will be half of this. So this is 6 into 49 plus 7 cancels, 2 1 ja 2 11. Now this will be 77 by 2. So on calculation we got this is 332.5 centimeter square. So this is the surface area. So CSA of solid. So this is the CSA of the solid. अभी देखिए इसको हम प्रैक्टिकली जो हमने माइनस किया हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं. सपोज थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं कि ये भी हमारा क्यूब है. क्यूब को अभी मैंने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल एंड से कवर किया हुआ है. ये हेमिस्फेरिकल एंड को मैंने लिया, ये कवर किया हुआ है. अभी कंप्लीट सरफेस एरिया मेरे को पूछा हुआ है सॉलिड की, तो सॉलिड की सरफेस एरिया क्या है, ये कंप्लीट
क्यूब की सरफेस एरिया प्लस ये हेमिस्फेरिकल एंड की सरफेस एरिया। अब देखिए हमने जो क्यूब की सारी सरफेस एरिया लिया हुआ है 6L², मीन्स 6 इंटू साइड स्क्वायर। अभी यहाँ पे 6 फेसेस, सारी फेसेस इंक्लूड नहीं हो रही है, बिकॉज जिस फेस पे ये हेमिस्फेरिकल एंड है उसमें देखिए सिर्फ इतनी एरिया ही आ रही है, बाकी की सारी एरिया क्या होगी, ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है इतनी एरिया क्या होगी, हेमिस्फेरिकल एंड ने कवर कर ली, ये देखिए इतनी एरिया। तो सिर्फ सुपर इम्पोज्ड एरिया कितनी आ रही है, ये कॉर्नर्स की एरिया आ रही है। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से पहले तो 6 फेसेस की एरिया को निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस के एरिया को निकाल लिया, उस एरिया में से जो मेरी ये एरिया कवर हो रही है यहाँ से हेमिस्फेरिकल एंड के बेस से, उसको मैंने क्या किया, दैट इज द सर्कुलर शेप, तो उसको πr² सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो πr² सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज दैट एरिया इज नॉट विजिबल, वो एरिया क्या होगी हमारी सुपर इम्पोज्ड हो गई, वो ओवरलैप हो गई किससे, हेमिस्फेरिकल एंड से। तो हेमिस्फेरिकल एंड से जो एरिया सुपर इम्पोज हो गई, उसको एरिया को मैंने अभी क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। Now coming to question number 5th. A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So remaining solid का भी हमें surface area निकालना है। ये सपोज एक हमने एक अपने क्यूबिकल स्ट्रक्चर को ले लिया है, इसमें से भी क्या किया हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट आउट किया हुआ है इस तरह से। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे ये बिल्कुल बॉटम से टच करते हुए जा रही है कंप्लीट, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया हुआ है यहाँ से। तो अभी ये कट करने के बाद में रिमेनिंग जो सरफेस एरिया है उसको भी हमें निकालना है। ये सरफेस एरिया आएगी, ये सरफेस एरिया को भी निकालना है हमें। तो इसमें देखिए अभी एक तो टॉप सरफेस चला जाएगा πr² के टर्म में, और दूसरा ये हेमिस्फेयर के टर्म में चला जाएगा। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, so radius of hemisphere will be the half of this, the length of the cube, length of cube is L, so this will be the half of that, means this radius we can mark, this is L/2 from this end to this end, this is L/2. So surface area of remaining solid, so remaining solid के surface area कितनी होगी, this will be the area of cube minus, so area of cube minus, so area of the complete surface solids, so solids की अभी surface area बन रही है तो complete cube की surface area आ रही है, और उसमें क्या होगा प्लस area of this hemisphere, so area of hemisphere and minus the area of base, बिकॉज बेस की एरिया तो वो तो खत्म हो गई अभी, बिकॉज वहां से अभी हमने क्या किया, एक स्फेरिकल एंड को बाहर निकाल दिया, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ही था इसमें। सो सरफेस एरिया of remaining solid, so this will be 6L² plus 2πr² minus πr², so this will be 6L² as it is plus 2πr² minus πr², so this will be πr², so we can calculate this is 6L² plus pi, same pi into r² will be L/2 whole square, so this will be 6L² plus pi times pi L² by 4, so we can take 1/4 L² as common, 1/4 L² as common,
So from here this will be pi, from here this will be pi, and plus from here this will be 24. So this is the area of the remaining solid. So area of remaining solid. So we got the area of remaining solids. So this is itna times square units. We need to write square units because area is always in the square form. इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से व्यू आएगा इसमें. अभी सपोज एक ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें से अभी हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल एंड को निकाल दिया. हेमिस्फेरिकल एंड को जब भी आप निकालोगे तो ये जो सरफेस था, सरफेस में भी क्या होगा, एक सर्कुलर शेप जितना पोर्शन रिमूव हो जाएगा. तो सर्कुलर पोर्शन ये रिमूव हो गया 6L स्क्वायर में से, और प्लस जो हेमिस्फेयर की एरिया थी वो ऐड ऑन होगी. Now coming to question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder. So this is the medicine capsule. This is in the shape of the cylinder, and ends are the hemispherical ends for this. So a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end as shown in the figure. The length of the entire capsule is 14 mm. So this length, entire length is given for us. So total length is given, this is 14 mm. So length is given 14 mm to us, and this height is given. So this is equivalent to the diameter. So this is 5 mm given to us. So radius we can find out, even the length of the cylinder can be find out. So length of the cylinder, this would be, so this will be 9 mm. 2.5 subtracted, then 2.5 subtracted. So this is 2.5 mm, and this is also 2.5 mm. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. So we need to find out the surface area of the complete structure. So we can find the length of cylinder. So length of cylinder will be 14 minus 2.5 plus 2.5. So this will be 14 minus 5. This will be 9 mm. And radius of cylinder. So radius of cylinder will be 5 by 2. So this will be 2.5 mm. So area CSA of capsule, this will be CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemispheres, because there are the two hemispheres. So we will multiply area of one hemisphere by 2, and this is the cylindrical end. So total surface area will be the area of this cylinder, total surface area of the cylinder plus CSA of these two hemispheres. So this is equals to CSA of the cylinder is 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square. So this will be equals to 2 pi RH plus 4 pi R square. Now we can take the common. So 2 pi R will be common. So from here it will be H plus from here 2 will be remaining, and this will be R. So this will be 2 into 22 by 7 into R is 2.5, and this is H.
So H is again 9 plus 2 into R. So this will be 2 into 2.5. So from here we can calculate, this is 44 by 7 into 2.5 times, this will be 9 plus 5. So this is 44 by 7 into 2.5 times, we can simplify it, this is into 14. So this is 7 1 ja, 7 2 ja. So this is now 88 into 2.5. So this will be equals to, now we can multiply it. So this is 220 mm square. So this is the area for the capsules. So we got this area. So this area is equal to the area of cylinder plus area of two hemispherical ends. So coming to question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. So this is a tent in the shape of a cylinder and this is surmounted by a conical top. So a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively. Height is given for the cylindrical end. So this height is 2.1 meter and the diameter is given 4 meters. So radius will be 2 meters. So radius will be 2 meters. We can write it down here also. Height of cylindrical end is equals to 2.1 meter and diameter of cylindrical end is 4 meters. So radius we can find out. Radius of cylindrical end will be 4 by 2. So this will be 2 meters. And the slant height of the top is 2.8 meter and this slant height is given 2.8 meter. So we can make a list of this. Slant height is equals to 2.8 meters. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. So we need to find out the total area of the tent. So total area of the tent will be equals to the curved surface area of the cylinder plus curved surface area of this conical end. So this both the radius will be the same. So we can find surface area of tent will be equals to CSA of cylinder plus CSA of cone. So this will be CSA of cylinder, we know 2 pi RH plus CSA of cone is pi RL. So we can take pi RH common. So from here this will be 2H plus L. So this is 22 by 7 into R. R is known 2. Then this is 2 into height. H is 2.1 plus L is already given 2.8. So this is equals to 44 by 7 times and this will be 4.2 plus 2.8. So this will be 44 by 7 into, now we can add up and multiply. So this will be 0. So this is 7 only. So 7 cancels. So this is 44 meter square. So area of tent we got. So area of the tent is 44 meter square. Now we need to find out the cost of the canvas used for making this tent.
So cost of canvas. So cost of canvas will be equals to area into the rate. So area we know 44 and rate is rupees 500 per meter square. So this will be equals to rupees 22,000. So we got the cost also for this canvas cloth. This is 22,000. So simply we got the curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone. So coming to question number 8. From a cylinder whose height is 2.4 centimeter. So a cylinder is given to us, we can make it. Height is given 2.4 meter. So from a solid cylinder, now this is a solid cylinder minded. So there will be this and this complete surface will be filled up now. So this is a solid cylinder given to us. So from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, so this is 2.4 centimeters and the diameter is 1.4. So diameter is given 1.4 centimeter, so this will be 0.7 centimeter, radius will be 0.7 centimeter, half of the diameter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. A conical cavity is hollowed out. So find the total surface area of the remaining solid. So height of cylinder. So height of cylinder is already given. This is 2.4 centimeter. And diameter of cylinder, this is 1.4 centimeter. So we can find out the radius of cylinder. This will be half of the diameter. So 1.4 divided by 2. So this will be 0.7 centimeters. And the radius of cone. So it is given that radius of the cone is same as the radius of the cylinder. So this is again 0.7 centimeter and height of cone is given. So this is same height as 2.4 centimeter. Now we need to find out the slant height of the cone. So slant height of cone will be, this will be L equals to h square plus r square root. So L equals to h, we already know this is 2.4 whole square plus r is 0.7 whole square. So L will be equals to 5.76 plus 0.49. On adding, this will be 6.25 whole root. So we can find out this. So this will be equals to 2.5 centimeters. So we got the slant height. Now we need to find the total surface area of the remaining solid. So total surface area of the remaining solid. Now see that this is the cone which has been hollowed out or which has been removed from this. So this complete structure has been removed now. So this is the removed, this portion has been removed. Now we need to find out the area of the remaining solids. So area of the remaining solid, area of the remaining solid will be curved surface area of this cone, curved surface area of this cylinder and this base area. So area of remaining solid, will be CSA of cylinder plus CSA of cone plus base area.
Why we are counting the base area? Because this is a solid cylinder. So solid cylinder will have the base in it. So base area plus the curved surface area of the cylinder plus the area of this conical cavity. So this will be equals to CSA of the cylinder 2 pi RH plus CSA of the cone pi RL plus base area will be pi R square. Now we can put the values. So this will be 2 into 22 by 7 into R. R is 0.7 into H. Height of the cylinder is given 2.4 plus again pi. So this is 22 by 7 into R 0.7 plus 0.7 into L again. So L we got 2.5. So this will be 2.5 plus pi. This is 22 by 7 into R square will be 0.7 whole square. So we can simplify it now. So 7 cancelled 0.1. So this will be 4.4 into 2.4 plus 7 cancelled 0.1. So this will be again 2.2 into 2.5 plus 22 into 0.1 into 0.7. So on calculation and simplification, we get that the total area is 18 centimeter square. So this is the area of remaining solid. So area of the remaining solid comes out to be 18 centimeter square. So total area will be again this curved surface here. अभी जो कोन क्रिएट किया हुआ है तो कोन का भी क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो प्लस सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ध्यान रखना। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, बेस की एरिया लेकर के नहीं जाते हैं, बेस की एरिया लेके जानी पड़ेगा बिकॉज उसने सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। तो सॉलिड सिलेंडर की एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सो ऑल थ्री एरियाज विल बी द टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9th, a wooden article was made by scooping out hemispheres from each end of the solid cylinder. So एक कोई solid cylinder लिया हुआ है, ये solid cylinder है अभी, so we'll make these ends at solids. So from this solid cylinder, two hemispheres are scooped out. दो हेमिस्फेयर्स को क्या किया हुआ है, स्कूप्ड आउट किया हुआ, निकाल दिया गया यहाँ से। So two hemispheres are scooped out from this solid cylinder from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, this complete height is given to us. This complete height is 10 centimeter. So from this 10 centimeter height and its a base is of radius, this base radius is already given to us. So this is 3.5 centimeter. So base radius is given to us. This is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. We need to find out the total surface area. So height of cylinder, this is equals to 10 centimeter given to us, and radius of cylinder is equals to radius of hemisphere. Both the radius are same, and this is equals to 3.5 centimeter. So now we can calculate the area of solid. Area of solid after scooping out these two hemispheres. So this will be CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemispheres.
सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसमें, ये जो हेमिस्फेरिकल कैविटी बनी हुई ये और इधर से जो हेमिस्फेरिकल कैविटी बनी हुई ये, अगर इसका हम एग्जैक्ट व्यू देखना चाहते हैं तो सी ये कभी इधर से हेमिस्फेयर बन गया और एक इधर से ये हेमिस्फेयर बन गया। मीन्स अगर एरिया की बात करें तो ये पोर्शन आ गया अभी। नाउ दिस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया। सो कंप्लीट सरफेस एरिया मीन्स ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर की, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर की और ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसकी, हेमिस्फेयर्स की, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी हेमिस्फेयर की। तो इतना भी है जितना भी मैंने रेड पोर्शन किया हुआ, दिस इज नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमिस्फेरिकल एंड्स की आ रही है। तो ये सारी कर्व्ड सरफेस एरिया होगी अभी। तो यही मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, बिकॉज दे आर द 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, सो 2 इंटू CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर। So this will be equal to CSA of the cylinder will be 2 pi RH plus 2 into this will be 2 pi R square. So this we can take 2 pi RH common. So this will be H plus 2R. So this will be 2 into 22 by 7 into R. R is 3.5. Then H is 10 plus 2 into 3.5. So 7 5 ja, this is 0.5. So this is again 22 into this will be 10 plus 7. So this is equals to 22 into 17. So this will be 374 centimeter square. So area of solid. So we got area of solid as 374 centimeter square. So we have completed exercise 3.1. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।